Good morning, students. Welcome back again. So, let's start the preparations of aldehydes and ketones. This topic we're going to discuss in this video. Okay, so we'll see the preparations of these aldehydes as well as ketones. Later, we'll see the carboxylic acids preparations, which means synthesis. Okay, so here first one we're going to see the preparations of aldehydes by the ozonolysis के ozonolysis के जरिए किस तरह से हम how we prepare the aldehydes we'll see by this ozonolysis and then we'll see the hydrations of alkynes देखते हैं by the hydration of alkynes फिर हम देखते हैं preparations of aldehydes from acyl chloride के जरिए देखते हैं ठीक है फिर एलिफेटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड से देखते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों भी फ्रॉम असाइल क्लोराइड से देखते हैं ठीक है सो हियर बाय ओजोनोलिसिस जो है इन द प्रीवियस ईयर 11th स्टैंडर्ड में इन द 15th चैप्टर जो कि ओजोनोलिसिस अल्कीन के साथ तैयार करता है ओजोनाइड देता है ओजोनोलिसिस इज ओजोन इज द O3 के साथ अल्कीन रिएक्ट करता है तो क्या देगा इट गिव्स ओजोनाइड what it gives the ozonide this ozonide what happens here it decompose होता है किसके साथ zinc dust as well as water molecule के साथ then it gives aldehydes or ketones so the main important point by this ozonolysis that you have to know alkenes that is react with ozone to give ozonide it gives which on the decomposition with zinc dust as well as water molecule that gives the aldehyde or ketone okay so this about the preparations or synthesis of aldehydes or ketones by the ozonolysis okay so next by hydration of alkynes में क्या होता है sulfuric acid in the presence of around 40% of sulfuric acid with alkynes that react with water जिसमें 40% of sulfuric acid रहेगा with the presence of 1% of mercury sulfate that gives aldehydes or ketones that is the hydration of alkynes के जरिए we can prepare the we can synthesize the aldehydes or ketones okay so second reaction क्या रहेगा by the hydration of alkynes यहाँ पर alkynes that is react with water in the presence of 40% of sulfuric acid and 1% of mercuric sulfate to give aldehydes or ketones okay so these are the very simple okay next third preparation aldehydes as well as ketones from acyl chloride here are COCl acyl chloride see in this preparation what happens here this acyl chloride is reduced see here this acyl chloride it is reduced to corresponding aldehyde by the hydrogen here H2 by the hydrogen by using palladium as a catalyst that is poisoned with barium sulfate palladium जो है as a catalyst यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ठीक है and this reaction is it is very important one more thing इस reaction को क्या बोलते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है इस reaction को क्या बोलते हैं रोजनमंड reaction reduction reaction क्या बोलते हैं रोजनमंड reduction reaction if you get any kind of questions like define the Rosamond reduction reaction with example then write this when acyl chloride is reduced to corresponding aldehyde by the hydrogen by using palladium as a catalyst that is poisoned with the barium sulfate this reaction is known as Rosamond reduction reaction right this reaction that is acyl chloride or COCl in the presence of H2PD palladium that is poisoned with BaSO4 that is barium sulfate it gives aldehyde okay so write this reaction with this definition okay so preparations of aliphatic ketone by the acyl chloride here okay so what happens here in this preparation of aliphatic ketones from the acyl chloride see usually जो ketones है they are obtained from acyl chloride by the reaction with dialkyl cadmium which is prepared by the treatment of cadmium chloride that is CdCl2 you can see here CdCl2 सबसे पहले इसको prepare करना पड़ता है okay so what happens here how we can prepare it with example so first you have to write the
ketones that is obtained from acyl chloride by the reaction with dialkyl cadmium, which is prepared by the treatment of cadmium chloride and Grignard reagent. ये तो वेरी सिंपल रिएजेंट है, आप सबको मालूम है RMJX which is Grignard reagent with cadmium dichloride we can prepare, किसको प्रिपेयर कर सकते हैं, डायल्काइल कैडमियम को प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, so dialkyl here R2CD, that is dialkyl cadmium. Okay, so by using this dialkyl cadmium as well as acyl chloride, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है R2CD. R2CD with acyl chloride you will prepare the ketone. Okay, so write this also. This is very important example while you explaining the preparation of aliphatic ketone from acyl chloride. ठीक है, aromatic नहीं, aliphatic के लिए बहुत important है. ठीक है, and there are many example in the textbook 261 page number refer, जैसे कि ethanol chloride और as well as dimethyl cadmium. See, R2CD जो है, R2CD यहाँ पर डाइमिथाइल यानी कि CH3 ट्वाइस, CH3 ट्वाइस डाल दो जो डाइमिथाइल कैडमियम हो जाएगा, उसके साथ इथेनॉल क्लोराइड यानी कि 2CH3COCl, 2CH3COCl. यू कैन गिव एनी एग्जांपल, जैसे कि इथेनॉल क्लोराइड और डाइमिथाइल कैडमियम, इट गिव्स एसीटोन जिसको हम बोलते हैं प्रोपेनो. ओके, सो दिस इज द अनदर एग्जांपल. एसिटोफिनॉन भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, बेंजोनाइल क्लोराइड विद डाइमिथाइल कैडमियम के साथ रिएक्शन होके एसिटोफिनॉन आल्सो वी कैन सिंथेसाइज. ओके, सो दिस इज अबाउट द preparations of aliphatic ketones from acyl chloride. acyl chloride के जरिए aldehyde भी प्रिपेयर कर सकते हैं और aliphatic ketone को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन in case of ketone में we have to prepare the dialkyl cadmium first by using the Grignard reagent as well as cadmium chloride. Okay, so that's it, and we'll see the next which is aromatic aldehyde. देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, aromatic aldehyde preparation देखते हैं हाइड्रोकार्बन से. Okay, so let's see. So here you can see preparations of aromatic aldehydes from the hydrocarbons. Okay, सबसे पहले इसमें देखेंगे इटर्ड रिएक्शन है, तो जितने भी इसमें जो रिएक्शंस आएंगे, जैसे कि इटर्ड रिएक्शन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अरीन यूजिंग CrO3, ये इटर रिएक्शन जो है, इटर्ड रिएक्शन दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. गेट अ मेन कोच फॉर्मुलेशन अरेंज, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. जितने भी रिएक्शंस आ रहे दैट ऑल आर इम्पोर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट विल सी दिस इटर्ड रिएक्शन. ओके, सो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो मिथाइल ग्रुप है, वो जो है दैट इज बॉन्डेड टू अरोमेटिक रिंग इनटू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है, COH. So for obtaining aromatic aldehyde from the methyl arene, you can follow these methods. जैसे कि एटर्ड रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं, उसके रिएक्शंस भी देखते हैं. तो यहाँ पर एटर्ड रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन अगर आप सीख लिए या प्रैक्टिस कर लिए, आपको ये याद हो गया, तो आपको एटर्ड रिएक्शन भी याद हो जाएगा. ओके, इसमें क्या है, सी हियर, मिथाइल ग्रुप इन द मिथाइल बेंजीन, मिथाइल ग्रुप इन द मिथाइल बेंजीन is oxidized by oxidizing agent. यहाँ पर oxidizing agent क्या है वो important आपको याद रखना है. This bromyl chloride is your oxidizing agent. यहाँ पर oxidize क्या हो रहा है, मिथाइल ग्रुप जो कि मिथाइल बेंजीन में जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसके जरिए, एक एजेंट के जरिए, दैट इज ब्रोमाइल क्लोराइड के जरिए. ओके, सो इन कार्बन, okay, in this carbon disulfate, here the carbon disulfate is using as a solvent to form chromium complex. Okay, so this chromium complex, see, from which the corresponding aldehyde यानी कि benzaldehyde is obtained by this, कहाँ से, इस complex के जरिए हाइड्रोलाइसिस होता है. फिर ये complex क्या होगा, जो chromium complex form हुआ है from this toluene with oxidizing agent bromyl chloride. ठीक है, and
using the solvent carbon disulfate, the chromium complex is formed. This chromium complex, it gives the benzaldehyde on the acid hydrolysis. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एटोड रिएक्शन या इटोड रिएक्शन बोलते हैं. ओके, so this is the method one for the preparation of aromatic aldehyde from the hydrocarbon. Next जो है by oxidation of methyl arene using chromium oxide. तो यहाँ पर मिथाइल अरेन जो है, दिस मिथाइल अरेन या मिथाइल बेंजीन जिसको हम बोलते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू बेंजाइलिडीन. ये बेंजाइल्डिहाइड जो है इट कन्वर्ट बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट on the treatment with chromium oxide in acetic anhydride. See, सबसे पहले इन तीनों का रिएक्शन होगा, क्रोमियम ऑक्साइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, मिथाइल अरीन. ठीक है, एट हाई टेम्परेचर दैट इज 273 to 283 केल्विन. ठीक है, तो यहाँ डाई एसीटेट जो है वो डिराइव होता है कहाँ से? ऑन दी हाइड्रोलिसिस. दिस on the hydrolysis it gives the aldehyde group which is benzaldehyde group. ये क्या होगा? this the benzyl जो acetate है, जो this diacetate, it on the hydrolysis it gives benzaldehyde. Okay, so these are the two methods of synthesis of aromatic hydroaldehydes from the hydrocarbons. And there are two other methods are there, जैसे कि by side chain फ्लोरिनेशन ऑफ टोलिन है, जिसको हम बेंजाइल्डिहाइड फॉर्म होता है जिसमें, और गैटोमेन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरेन्स है. चलिए वो दोनों भी देख लेते हैं. ओके, सो हियर फर्स्ट थर्ड वन which is by side chain of fluorination of toluene. See, this is toluene. तो यहाँ पर side chain of this fluorination of toluene it gives benzyl chloride. क्या देता है? साइड चेन ऑफ दिस क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन इट गिव्स बेंजिल क्लोराइड. दिस which on acid hydrolysis at 373 Kelvin it gives benzaldehyde. So this benzaldehyde is officially जो commercially जो होता है इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, that is by this method. Okay, so benzaldehyde is manufactured commercially by this method. Okay, so you might be get this answer like the commercial, explain the commercial manufacture method of benzaldehyde. ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. Then you write the aldehyde preparation synthesis from the hydrocarbons, that is side chain chlorination of toluene. यहाँ पर side chain chlorination of toluene it gives benzyl chloride and it on the hydrolysis it gives at कितना 373 Kelvin it gives benzaldehyde. This is the commercial method for the preparation of benzaldehyde. Okay, so next जो है that is Gattoman Koch formulation of arene. So in this synthesis what happens here, the benzene या फिर substituted benzene हो, benzene या फिर substituted benzene it treated with the high temperature with the carbon monoxide and hydrogen chloride, that is HCl in the presence of anhydrous ammonium chloride. Okay, या फिर cuprous chloride. ठीक है, CuCl3 या फिर AlCl3 present हो, it gives benzaldehyde या फिर substituted benzaldehyde बोलते हैं जिसको. ठीक है, so this is the method for the preparation of aromatic aldehydes from the hydrocarbons. There are four methods. सिंथेसिस ऑफ एटर्ड हो गया, बाई दी एटर्ड हो गया, एटर्ड रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन के जरिए, जैसे कि मिथाइल अरेन यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन जो कि मैन्युफैक्चर कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड है. नेक्स्ट गैटोमैन कोच फॉर्मुलेशन हो. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ aldehyde only from the ester, only ester के जरिए. that it is very simple. Let's see that one here. The only by the ester we can prepare the aldehydes, that is here ester molecular formula functional group RCOOR dash, that is ester functional group. तो यहाँ पर it gives aldehyde. ठीक
है. व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन, एलिफेटिक या फिर अरोमेटिक एस्टर जो है दैट इज रेड्यूस्ड टू अल्डिहाइड्स. इट इज रेड्यूस्ड टू अल्डिहाइड्स. ठीक है, तो यहाँ पर आर एंड ओ जो है ना इट इज रेड्यूस्ड, इट गिव्स एच ग्रुप यानी कि आर सी एच विच इज एल्डिहाइड. एलिफेटिक हो चाहे अरोमेटिक हो एस्टर्स हो वो रिड्यूस होते हैं एल्डिहाइड से बाय यूजिंग डाइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि दिस ALH है. क्या है ये? डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड. अल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यहाँ ट्वाइस ब्यूटाइल दिख रहा है, ट्वाइस ब्यूटाइल वो डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, इसको हम डाई डाई BALH भी बोलते हैं या फिर ALH इन द ब्रैकेट IBU ट्वाइस ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर the reactions is usually carried at 195 डिग्री सेल्सियस में कैरी होता है. ये इसके लिए हम लोग 195 डिग्री में रखते हैं टू प्रिवेंट फर्दर रिडक्शन, मतलब आगे और भी रिडक्शन होने से बचाने के लिए इसको इतना टेम्परेचर में रखते हैं. ठीक है, टू प्रोड्यूस दिस aldehyde. ओके, so this is the method for the synthesis of aldehydes only from the esters. It is for whether aliphatic या फिर aromatic esters are used to reduced these esters to form the aldehydes. Okay, सो मेन आपको याद ये रखना है कि हम लोग यहाँ कंडीशंस में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं. यहाँ पर कंडीशन में जो इस्तेमाल करते हैं वो डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एस्टर. नेक्स्ट जो है एसिड का प्रिपरेशन देखते हैं. अभी अब तक जो हम लोगों ने देखा था वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का हो गया, एल्डिहाइड्स का हो गया था, एल्डिहाइड्स का हो गया था. एंड नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, so let's see first synthesis of this carboxylic acid. We'll see from the nitriles and amines, then we'll see the acyl chloride and anhydrides and esters के जरिए देखते हैं. ठीक है, first we'll see the from the nitriles and amines we can synthesis the carboxylic acid. See alkyl nitriles या फिर aryl nitriles ले लो. These on the acid hydrolysis it gives the amides. क्या होता है अल्काइल या फिर अराइल नाइट्राइल्स ऑन द हाइड्रोलिसिस इट गिव्स अमाइड्स एंड दिस अमाइड फर्दर अगेन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, so this hydrolysis is carried out by using the dilute mineral acids जैसे by using dilute sulfuric acid या फिर dilute HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, सबसे पहले जो अल्काइल नाइट्राइल्स या फिर अराइल नाइट्राइल्स जो है हाइड्रोलिसिस होके क्या देगा, अमाइड देगा. और अगेन जो फर्दर क्या होगा अमाइड हाइड्रोलिस होगा. ठीक है, इस हाइड्रोलिसिस में हम लोग जो मेन इस्तेमाल करते हैं दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, देन यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड. Okay, so this is about the synthesis of carboxylic acid from the nitriles and amides, how we prepare. Okay, so next is from the acyl chloride and anhydride chloride. Okay, so let's see that. Here you can see the next from acyl chloride and anhydride के जरिए how we prepare the carboxylic acid. See, in this it is very simple. See, acyl chloride is on the hydrolysis. See, the reaction shows that the explanation. Acyl chloride on the hydrolysis with the water, it gives carboxylic acid. So this method is useful for the preparation of aliphatic as well as aromatic acid. Okay, so this is the important reaction when explaining about the preparation after synthesis of carboxylic acid by many methods like nitrile के जरिए, amide के जरिए, acyl chloride, anhydride के जरिए. We can give the many examples. Also, here I have given the acyl chloride example. Acyl chloride on the hydrolysis it gives carboxylic acid. Okay, so by this method we can prepare the aromatic as well as aliphatic carboxylic acid. Okay, so next जो है anhydride. Anhydride is also same method.
वहां पर क्या है हियर व्हाट इज शोइंग एसाइल क्लोराइड, जैसे कि RCOCl, एनहाइड्राइड क्या आएगा RCOO डैश ऐसा रहेगा प्लस H2O, इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड. Okay, so these are the two methods you can use to explain the synthesis of acid. Okay, so next जो है from ester, we using the ester we also synthesize the carboxylic acid. It also gives the alcohol. See, in this method what happens, mm, by the ester, carboxylic acid can also be obtained by this on the hydrolysis with the dilute acid we can use. Okay, so what happens here, acid hydrolysis of this ester. In this case what happens, esters on the hydrolysis with the mineral acid, like here we are using dilute H2SO4. यहाँ पर mineral acid dilute H2SO4 या फिर dilute HCl यूज करते हैं, that gives the carboxylic acid also alcohol. This method is very important. Okay, and next जो है this is very important, saponification. Okay, so this question you might be get while you asking the viva or 1 mark question or MCQ. saponification क्या होता है, it is very important. Okay, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स भी बोला जाता है, ये पहले ही मैंने बताया था. ओके, सो अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या होता है, डाइल्यूट जो डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH, इट फॉर्म्स द सॉल्यूशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड. So it on the acidification with concentrated HCl, free acid is formed. Here propanoic acid is formed. Free acid का form होता है when using the dilute alkali, यहाँ पर sodium propanate and NaOH or KOH, it gives the water soluble of potassium and sodium salt, and इसको acidification के जरिए by using the concentrated HCl it gives the free acid. Here propanoic acid दिया गया है. ठीक है, सो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज सोप्स. सोप्स जो बनता है दैट इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स. ठीक है, दैट इज नोन एज सोप्स. हेंस अल्कलीन, जो अल्कलीन है on the hydrolysis of ester, that is called as saponification. It is very important. Okay, so this is about the synthesis of carboxylic acid, as well as we have seen the ketones भी देखा हम लोगों ने और aldehydes भी देखा. ठीक है, so that's it for today. We'll see in the next class the preparations of carboxylic acid from the benzyl benzene के जरिए भी देखेंगे. Okay, so there are other methods that are very important. Okay, that's it for today. We'll see in the next class. Okay, thank you, students.